ये जो इतने 1 मिनट आप बाहर तकरीर करते हैं कि मैं 30 सेकंड में लूंगा, और देखिए ये फिर एटलीस्ट भी कंसिस्टेंट। अगर आप सुनने देंगे तो बिल्कुल 30 मिनट भी लग जाएंगे, कम 30 सेकंड से डायरेक्ट आ जाए जजमेंट पे। अच्छा जी, जजमेंट अब इसमें हमने ये बजाय ये पैराग्राफ 3 पढ़ने के, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है उसमें। अब इसमें आपने पहले दो पैराग्राफ सेंटेंसेस पढ़ने में सारा जुमला नहीं पढ़ रहा। ये Para 2, he has also moved the detaining authorities, namely Superintendent Jail and the control by the Home Secretary and Chief Secretary Punjab, calling upon them that execution of sentence of death cannot take place unless the mercy petition is disposed of as required under subparagraph 2 of etc. of the prison. The release also sought by the petitioner, मैं छोड़ता हूँ release basically ये थी कि he should be. Are you saying that Mr. Zulfikar Ali Bhutto submitted a mercy petition? No. Why what's the relevant of this? His friend submitted and under the rules the friend can, ये rules मैंने quote किए हैं। अब उसमें मैं जाऊंगा तो लंबा करूंगा, मैं नहीं जा रहा हूँ उसमें। अब जुल्फिकार अली भुट्टो के एक दोस्त गुलाम जिलानी ने ये फाइल की और मैंने ये रिट कर दी उसी दिन कि इस पिटीशन पे एक शख्स है जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, वो ना फैसला करे बिकॉज ही इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। मर्सी पिटीशन तो दायर ही नहीं की गई ना, कहाँ दायर की गई है? ये दायर की गई, वो पिटीशन दी गई, तय हुई ना आपस में, लेकिन दायर तो नहीं की गई। भेजी रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट यू फाइल कर दी थी ना, ये रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट यू भेजी, मैं जो कह रहा हूँ भेजी, इसमें है दिया हुआ है कि वो बात, पर मुझे अगर सारे पढ़ने पड़े फैक्ट तो देर हो जाएगी। कहते हैं तो मैं सारी जजमेंट पढ़ देता हूँ। आप कह रहे कि वो हमने कहा जी ये ज़ियाउल हक फैसला करे, जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट आएगा वो फैसला करे कि दिस इज प्रीरोगेटिव। गॉट द पावर, वी गॉट द पॉइंट सर। आप इसमें ये देखिए पैरा 4 में the sum and substance of the arguments of the learned counsel for the petitioner is that though ordinarily the mercy or pardon power is prerogative of the crown, in our state of affairs with a written constitution and article 45 of the constitution and in a different context under the statutory provision of the provincial government through the president etc., the power is exercised, the execution of the sentence should the superintendent jail and other superior authorities concerned with the detention of the convict to not to carry out the sentence till the de jure president takes over the authority. अब मैं पैराग्राफ छोड़ता हूँ, पैराग्राफ 7 पे आता हूँ। Which provision of the constitution deals with mercy petitions? 45. Article 45 अभी भी वही है। The learned counsel has very ably assisted me in understanding not only the problem which required consideration and decision, but also the peripheral area of adjudication concerning exercise of the public power, particularly the pardon power. At this stage, while I am dismissing the petition in limine, I do not want to go into the greater detail than is absolutely necessary. The first circumstance which stands in the way of the petitioner, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं एक पैराग्राफ पे I'll tell you what you're doing, Mr. Aitzaz Ahsan. Now be clear in your mind what you want to do. The minute you invoke the power of pardon, you admit guilt. Sir, if you want to go that road, please be clear in your mind. No, ऐसे ना करें ना. How? देखें एक चीज. Wait a minute. I am asking for pardon for myself. If I've not done any wrong, surely not. The pardon implies guilt. Mr. Bhutto did not endorse. तो फिर आप ये क्यों पढ़ रहे हैं आप? ये अब देख तो लेके एक जज का वैन क्या था, ये मैं दिखाना चाहता हूँ। अब इस जज का तो ताल्लुक ही नहीं। Please let me go through this judgment and then ये सर इसमें मैं कहाँ था?
اگر آپ پرنسپل بتا دیں کیا ہے پھر میں اپریشیٹ میں آتا ہوں میں رکوا رہا ہوں میں ایکسیکیوشن رکوا رہا ہوں. جج صاحب کیا لکھتے ہیں میں اسی پہ آ جاتا ہوں. پیرا 10 میں ایکسیکیوشن رکوا رہا ہوں. اور پیرا 10 کیا کہتے ہیں جج صاحب؟ کہتے ہیں another point, اور مجھے بڑا ایبلی ہی another point which has been engaging my utmost attention is not so much in the domain of legality as of equity. It is that what the petitioner is seeking is not to perpetuate, maybe indefinitely, the agony of the convict by keeping in abeyance the exercise of mercy power, for one does not know, nor has it been made clear as to when a de jure president of his liking is to come into office. Kill him. This was the mindset. آپ اس سے کیا پوائنٹ کیا بنتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ایک اوور آل مائنڈ سیٹ تھا. دیر ود انسٹیٹیوشنل بائس. دیر از اے کیٹیگری. I am reinforcing that category of institutional bias. In this court, in another building in Rawalpindi and in the Lahore High Court, there was institutional bias. It didn't have to be... but that would apply to that period. You see, so all the decisions in that period would be would suffer due to that institution. If they were contrary, all the decisions, or overwhelming part of those decisions were against somebody. یہ کہنا تھوڑا مناسب اس لیے نہیں ہوگا because there were judges who went the other way, so saying it was institutional bias, I think that will not go. It would have been a unanimous. کیونکہ دیکھیں اگر unanimous ہوتا نا تو ہم آپ کی بات ٹھیک تھی. یہاں there was 4-3, so there were judges at that time who stood up and said no. وہ تو decision تھا. تو یہ کہنا کہ انسٹیٹیوشنل یہ تھوڑا مناسب نہیں. ٹرائل کورٹ میں تو 2 ججز نے بیل بھی دے دی تھی. جی ٹرائل کورٹ میں تو 2 ججز نے بیل بھی دے دی تھی. 2 ججز نے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ لیکن دیکھیں you cannot blame the entire institution. You can't do that. Are you arguing that the judgment is correct? Because these submissions, probably Mr. Kasuri will be saying what you are saying. How am I arguing that judgment is That's correct? the impression. You're going mercy petition. Mercy will come in when you confess, you admit to guilt. On behalf Mercy petition was not endorsed by the prisoner. It was made by a friend. And he had an We've understood your point that there was an institutional bias. چل آگے چل. institutional bias. اب اس میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ ذرا مجھے تو 1993 سپریم کورٹ. دیکھیں ہم بالکل پریزیڈنٹ نے انسٹیٹیوشنل بائس کی بات نہیں کی ہے, ہم وہاں نہیں جا رہے. آپ ابھی اتنا کھولیں گے اس کیس کو کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم فیصلہ ہی کبھی نہ کر پائیں. سر how much are we expected to read? We are human beings. Please give us a little bit of time. I have given you already my undertaking that I will finish today. When we are finished. Whenever you want to finish. Now I want to finish. I won't go on to tomorrow. Otherwise, I would like to do it tomorrow. ختم کریں نا, آپ نیا پوائنٹ بتائیں کوئی. I would like to go. یہ نیا پوائنٹ لیا ہے سر. یہ I am not going to step on Malik Manzoor's area that he is very ably competent. نیکسٹ پوائنٹ بتا دیں کیا. یہ سر اب 1993 the National Assembly is dissolved. یہ سر PLD 1993 Supreme Court page 473 Mian Mohammad Nawaz Sharif versus the Federation. Again, I put my foot down. I will not read this judgment. We are talking of the events of 1974. Sorry, یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کہیں میں جو مرضی میں کہوں گا. No. You are a friend of the court. We have treated you with respect. You cannot go. We are going back in time, seeing how things were done. Now we are coming to 93.
Sir, 90. Sorry, this is not on. There's a principle. We'll adjourn. Learned Counsel, Thank you, but we don't want to hear more. Please stay focused on the presidential Sir, I reference. am on. let's do, देखिए, as far as institutional bias आपने कह दिया, let's move on to the next आपका ground. But मैं एक और एग्जांपल देने लगा। मैं किताब को रिफर नहीं करता, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। आप देख लें, there are people sitting on the bench who Mr. Raza Rabbani, will you come to our aid? Research and 93 में Mr. क्या Raza आ Rabbani, गया? please come to our aid. Please tell us how this. आप आ जाइए ना, Rabbani साहब. Are you supporting Mr. Aizaz's contention or not? No, he's the. Let him answer. जी बताएं जी. It's very difficult for me to. No, it is difficult because it's also difficult for us. We want to know. I can't understand. Huh? Are you supporting the fact that mercy petition was submitted? No. So how is it relevant to us? It was submitted. Sir, I mean, it was submitted before a single I would judge. not like to sit in judgment on his arguments, but my No, here we are sitting on the. We've been asked to give our opinion on a judgment of this court. My lord. So you have to make your submissions if he asks. you a my question. lord, I will be making my submissions, but I would rather refrain from commenting on the submissions being made by Mr. नहीं हम आपसे नहीं कहते, हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर फर्ज करिए कि आप खुद पार्डन मांग भी रहे हैं और आप कहते हैं हम दियत की अमाउंट ले लेकिन के पीछे घूम रहे हैं, इसका एडमिशन नहीं होगा कि आपने कराया है। जी। फिर क्या होगा इसका मतलब? ये तो फिर बिल्कुल आप दूसरी तरफ जा रहे हैं ना. ये तो आप डिफरेंट साइड पे जा रहे हैं। ये पिटिशन किसकी तरफ से थी बैरिस्टर साहब? ये मलिक गुलाम जिलानी, ये भुट्टो साहब की तरफ से नहीं थी ना, उनसे कंसल्ट किया गया। आपको उनके अब इतनी ऑप्रेसिव एनवायरनमेंट थी कि ये पैराग्राफ की वजह से मेरे पास रात को पहुंच गया। मैंने वो ले ली उसकी कॉपी मुसद का उसी दिन। आप कह रहे हैं उनकी कंसेंट के बगैर फाइल हुई थी, तो पिटिशनर के वकील तो आप ही थे ना एतजाज साहब इसके अंदर? अरे पिटिशनर मलिक गुलाम जी जी, तो वो कैसे फाइल कर सकते हैं अपनी तरफ से मर्सी पिटिशन विदाउट कंसेंट ऑफ दी? उसमें प्रेजेंट रूल्स में लिखा हुआ है फ्रेंड कैन फाइल, और इसमें भी ये इन्होंने Mr. Bhutto didn't file the petition. मिस्टर भुट्टो डिड नॉट भाई फ्रेंड का ये मतलब है कि वो उनके बिहाफ पे फाइल कभी नहीं करें, की। अपने बिहाफ पे तो नहीं करेंगे ना. सर उनके बिहाफ पे नहीं, he did it on his own behalf as a friend. They were friend. Mr. Bhutto used to stay with him in Lahore. Are we entitled to say please don't argue this? नहीं सर, No, do you entitled give us this? नहीं देखिए अब देखिए it's 6 o'clock in the evening. sir, you are नहीं trying. भाई we are stopping you You on are this. trying to paint me in a corner by inferring that something that was not done on behalf of Mr. Bhutto was done in the best of intentions by a late friend of his. And वो अब आप उसमें से ये निकाल के एतजाज साहब ये हम तो नहीं निकाल रहे, आप निकाल रहे हैं, ये हम बात तो हम सुन नोट रहे कर हैं. चुके हैं, आगे चले। ये नोट मैं आगे चलने को हूँ, मुझे आप बस इस अगर आप नहीं खत्म कर करना ले, आगे Let's move to a point other than institutional bias. कोई और, let's go to the next one. 93 में आप क्या पॉइंट बताना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट? और अब मैं वो कहते हैं इंस्टीट्यूशनल बायस का जिक्र ना करूं। ये तो सारे इंस्टीट्यूशनल बाइस्ड पे ही सारा कुछ है, हमें नहीं पता कि उससे हम किस तरह निकलेंगे। चलिए नोट हो गया, हम ये जजमेंट भी पढ़ लेंगे, मैं पढ़ लूंगा, अब आगे चले। अब इसमें मैं अर्ज कर देता हूँ, जी इसको मैं खोलता नहीं हूँ किताबों में। 1993 में असेंबली डिसॉल्व और उसमें एक चार्ज था ऑन करप्शन। नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे। करप्शन का जो चार्ज था, उस चार्ज पे ये कहा गया जजमेंट में, जब रिस्टोर कर दी 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी असेंबली, और ये कहा गया कि करप्शन के अनप्रूवन एलिगेशन अखबारों में निकली हुई है, कॉलम आए हुए हैं, वो लगाए हुए हैं सारे। दीज आर नॉट सफिशिएंट टू डिसॉल्व एन असेंबली। और उनकी अगर चार्ज शीट देखें जो जिस पे डिसॉल्व किया है, वो तकरीबन वही है जो फारूक लगारी साहब ने इस्तेमाल की, जो गुलाम इसाक साहब ने। वो प्रूफ नहीं हुआ। चले अब एक में असेंबली रिवाइव हो गई,
हमने जब I don't know what, this is not a dissolution case, Tazasa. Sir, Please make your point. I don't like stopping you, but I'm forced to do so. Sir, Otherwise, we should just hear you and nobody else. There are others also waiting. इसका relevance क्या है? 93 में क्या Please carry on with this point of line of arguments. Please, I want to hear आप आखिर में कहना क्या चाहते हैं? 93 के हवाले से क्या कहना चाह रहे हैं? असेंबली बहाल हुई तो उसके बाद सर मैं आगे चलता हूँ. अच्छा, ये अगर वॉल्यूम देखें जो मैंने दी है हमारे सामने, ये पेज 13 पे अगर इसके आ जाए, ये पेज 12 पे, नीचे बायस एंड डिनायल ऑफ ड्यू प्रोसेस. आप इसमें देखेंगे कि मैंने ये फैक्ट्स ऑफ डिनायल एंड डिनायल ऑफ राइट्स दैट आर प्रूवन ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड एंड कैनॉट बी डिस्प्यूटेड इंटर एलिया, ये वो दिए हैं. ये लिस्ट है पूरी बहुत सौ की, और आप देखेंगे इसमें ज़्यादातर वो हैं जो कि मलिक साहब ने भी जिन पे रिलाई किया है, और वो वॉल्यूम 10 पेज 72, और कुछ मेरे उनके ज़्यादा हैं, कुछ मेरे ज़्यादा हैं. तो ये आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट. उन्होंने अब प्रेजुडिस के जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने दिए हैं. ये denying him the 4 valuable rights, ये AIR 1988 सुप्रीम कोर्ट 1531, इसमें आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इक्वालिटी पे 14, 19 ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, 21 ऑन लाइफ एंड पर्सनल सिक्योरिटी, ये इनको डील किया है. प्रेजुडिस, ये अब आप सिर्फ ये देखें कि ये जो मेरे पेजेस हैं, पेज 14 पे हूँ मैं, ये प्रेजुडिस का लफ्ज आप फॉलो करें, मैं इससे ज्यादा नहीं जाता. ये प्रेजुडिस एंड बायस अपेरेंट फ्रॉम द टाइमिंग ऑफ द एप्लीकेशन, ये आप देख लीजिएगा अगर आपने मुनासिब समझा. ये प्रेजुडिस कॉज्ड बाय विड्रॉल ऑफ द केस फ्रॉम सिंगल जज, ये मलिक साहब ने भी कवर किए, बट आई एम नॉट, मैं सिर्फ prejudice caused by entertaining the objection to jurisdiction, not to entertain the court proceeding. Bias apparent from changing court timings in jail. Prejudice caused by supplying several documents, not supplying several documents. वो पेज नंबर ये मलिक साहब के भी था. Prejudice caused by disallowing application for producing defense witness. Then bias, institutional bias. इस institutional bias को मैं छोड़ता हूँ क्योंकि इसमें मैंने और कुछ लिखा हुआ है, था मेरी ये आर्गुमेंट, और लेकिन अब आप उससे मुझे नहीं दे सकते. बहुत कुर्बानियां भी दी हैं उसमें, इसलिए हम बात करते हैं. शुक्रिया मोहतरमा. अच्छा, ये ऑल इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन सबमिटेड ड्यूरिंग द ट्रायल डिसमिस्ड इन लिमनी, ये मैंने उनकी लिमनी में जो पेज नंबर्स हैं कि ये इन लिमनी डिसमिसल का एक सबऑर्डिनेट जज को कोई ये इख्तियार नहीं है कि वो बगैर नोटिस दिए दूसरी पार्टी को मेरी डिसमिस कर दे पिटिशन, और 20 इस तरह उन्होंने डिसमिस किए, और वो हाई कोर्ट के जज बन के बैठ गए कि जी डिसमिसल इन लिमिटेड. बायस ऑन दिस रिकॉर्ड मैंने वही पेजेस जो है उसके सेपरेट एंड कम्बरसम ट्रायल प्रोसीजर अडॉप्टेड फॉर शहीद भुट्टो वाज वायलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट. अच्छा, फिर सर इफ केसेस ऑन इंस्टीट्यूशनल बायस, ये मैंने इंडियन केसेस भी आपको दिए हैं, और एक टर्किश केस भी है, कैनेडियन भी था. अच्छा, इफेक्ट ऑफ बायस आई एम गोइंग थ्रू रीडिंग. इसमें केसेस ऑफ मोहम्मद अब्दुल्ला, फुंडकर मुश्ताक, मोहम्मद इस्माइल चौधरी, खैर दी खान, आफ्ताब शहबान मीरानी, खैर दी खान अगेन 1989, मोहम्मद अकरम शेख, आसिफ सरदारी,
South African Court of Appeal, and then the Supreme Court's judgment itself admits violation, yet does not extend benefit to Shaheed Bhutto. The judgment intrinsically itself admits, so many please read para 915 at page 387 of PLD 1979. ये पढ़े ना, ये रेलिवेंट है. 915 पेज पैरा 915. कोई रेलेवेंट नजर आ गया सर आपको? नहीं, ये आपने लिखा है ना, ये अभी आप आए रहे हैं, ये तो बड़ा जबरदस्त पॉइंट लग रहा है. इसी पे तो आपको ला रहे थे कि आप आ जाए रेलेवेंट पे. जी रेलेवेंट एंड मोस्ट रेलेवेंट. अच्छा, थैंक यू सर. 915 पढ़ लेते हैं आपने. ये प्यारा 915 in the light. जी सर. Let's read it. Page 387. Page 387. In the light of the declared law, a final conclusion as to bias. In the light of the declared law and the facts discussed above, I have reached the conclusion that although some of the orders made by the trial bench in the day-to-day conduct of the case may not have been correct on a strict view of the law, and some others may not have been fully called for in the facts and circumstances of the case, yet these were all matters within the discretion of the court, and mere error therein cannot amount to proof of bias. I wish he had identified. ये तो generally हर चीज को whitewash kar diya. The appellant was unfortunately misled into thinking from the very start of the case that the learned acting Chief Justice was biased against him. There was in fact no factual basis for in respect of any of the other four learned judges constituting the bench. In accordance with law and the conclusions reached by the High Court on the merits of the case have been found to be correct, and detailed contentions that the trial was in any manner vitiated by reason of bias on the part of... जी सर, you skipped some portion. The trial of the appellant has by and large been conducted substantially in accordance with law. I don't know what this means, by and large. By and large is a vague term. इसकी जगह बताते कौन सी एप्लीकेशन को ये अप्लाई कर रहा है. ये तो वेगनेस से ही it suffers from. By and large. I've never come across such phraseology before. ये जो दरखास्तें आपके लिमनीज में खारिज हुई, आपने कहा नोटिस नहीं दिया गया. खारिज करने के लिए नोटिस लाजमी है. अगर अलाउ करना हो तो फिर दूसरी पार्टी को नोटिस करना लाजमी है. दूसरा क्वेश्चन ये है कि वेदर वो जो दरखास्तें खारिज हुई उसको कभी आपने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया? वेदर जो इम्पोर्टेंट, अगर वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी वो एप्लीकेशन जिनके ऊपर फैसला आपको चाहिए था, तो उसको चैलेंज किया गया बिफोर द सुप्रीम कोर्ट? जी, कुछ को चंद को किया गया. मसलन बेंच की और बायस का मसला, वो रिपोर्टेड जजमेंट है, वो हम लेके गए ऊपर. और आप कहते हैं बहुत सारी एप्लीकेशन जो खारिज होगी लिमनी विदाउट नोटिस. सर वो तो खुद एडमिट कर रहे हैं. मैं क्या कह रहा हूँ, खुद एडमिट कर रहे हैं कि बहुत सारी बायस की एप्लीकेशन जब खारिज हुई फिर सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ क्या हुआ? ये सर वो ये ट्रांसफर ऑफ केस की एप्लीकेशन दी गई. दिस इज 1977 SCMR page 514. Can you repeat the citation again? My lord, 1977 SCMR. Yes. 514. अगर हम उस जजमेंट को कहते हैं कि वो वाली बायस थी, लेकिन ये जजमेंट चैलेंज नहीं, इस रेफरेंस में इस जजमेंट का जिक्र नहीं है, तो बायस को तो इसमें भी कंफर्म कर दिया गया कि बायस नहीं है. ये ट्रांसफर की थी, इस पे ग्राउंड तो वही थे ना, बायसनेस के ग्राउंड.